India has unveiled a major boost to border infrastructure. Defence Minister Rajnath Singh inaugurated 125 key projects in Ladakh, including new roads, bridges and the crucial Shyok Tunnel aimed at improving mobility in high-altitude areas. He also dedicated to the nation the Galwan War Memorial, honouring the bravery of Indian soldiers. The Defence Minister noted that Operation Sindoor has shown for the forces discipline and restraint while underlining their ability to deliver a stronger response whenever required. DD India's Nishchoy Roy reports. India has taken a major step to boost border infrastructure. Defence Minister Rajnath Singh has unveiled a significant set of projects in Ladakh, strengthening connectivity and strategic preparedness along sensitive frontiers. Defence Minister Rajnath Singh on Sunday inaugurated 125 key infrastructure projects from Ladakh. The package includes 28 roads, 93 bridges and 4 strategic assets worth Rs 5,000 crore, the highest value set ever completed by the Border Roads Organization. The projects span Ladakh and Jammu and Kashmir and also extend into 7 states: Arunachal Pradesh, Sikkim, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan, West Bengal and Mizoram. A major highlight is the Shyok Tunnel on the Darbuk-Shyok Daulat Beg Oldi Road, which will provide all-weather access to forward areas. The minister called it a crucial link for mobility in high-altitude terrain and praised BRO's role in strengthening border infrastructure. इतनी बड़ी संख्या में यानी 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन एक साथ आज तक कभी नहीं हुआ है। तो यह अपने आप में बीआरओ के लिए और हम सबके लिए मैं मानता हूं एक मेजर अचीवमेंट है। आज लद्दाख में ही दारबुक-श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पर निर्मित 920 मीटर लंबे श्योक टनल का भी उद्घाटन हुआ है। दुनिया के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण टेरेन्स में निर्मित यह इंजीनियरिंग मार्वल लद्दाख जैसे स्ट्रेटेजिक एरिया में ऑल वेदर रिलायबल कनेक्टिविटी इंश्योर करेगा। Rajnath Singh also virtually inaugurated the Galwan War Memorial, honouring the bravery of Indian soldiers. He also noted that Operation Sindoor showed the forces restraint and discipline, while making clear that they remain fully capable of delivering a stronger response whenever required. पहलगाम के दुर्दांत आतंकी हमले का जवाब देते हुए हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर को प्रभावी तरीके से अंजाम दिया तो आतंकियों का क्या हश्र किया ये दुनिया जानती है। वैसे करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारी सेनाओं ने पराक्रम के साथ साथ धैर्य का भी परिचय देते हुए उतना ही किया जितना कि आवश्यक था। इतना बड़ा ऑपरेशन इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रांग थी। In the past 2 years, 356 BRO projects have been dedicated to the nation. The government has also raised the BRO's budget to Rs 7,146 crore, underscoring its vital role in national security. Nishchoy Roy's report for DD India.